अनिशा लिमरा एंगेजमेंट टीम से एंड दिस इज निकेश फ्रॉम कम्युनिकेशन टीम्स। तो हम ही है जो आपको पूरे इवेंट के थ्रू दिखने वाले हैं। हम ही है इस इवेंट के होस्ट और आप सभी के दोस्त। Hope you are all excited for today's event and let's make this event fun and exciting. Students, अगर आपके बैचमेट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उनको एक रिमाइंडर दीजिए एंड उनको भी ज्वाइन कराइए। Okay, before we begin with the graduation ceremony, we have a small set of rules for you. Please be unmuted throughout the event and speak only needed. Use the chat box if you want to comment. And also, one last thing, be participative and attentive. हम तो हुडी पहन के पूरी तरीके से रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शंस पुट कीजिए एंड बताइए कि आप कितना अच्छे से रेडी हैं। क्या पता आपके एक स्मॉल रिएक्शन से आपके होस्ट और दोस्त के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। Wow, I can see everyone's excitement. Thank you, Mukesh. Thank you, Nishat. Thank you, Praveen. Thank you, Zain. Lovely expressions. मुस्कान लाने के लिए धन्यवाद। क्या आपको पता है कि आज अंतरंग भी मुस्कुरा रहा है? बट क्यों? क्योंकि आज अंतरंग का 9th बर्थडे है and it is also celebrating 15th graduation day ceremony. तो चलिए देखते हैं अंतरंग की 9 इयर्स की जर्नी कैसी थी और सुनते हैं उन लोगों से जो अंतरंग के मुस्कुराने की वजह है। सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे। अंतरंग क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि हमारे देश में लाखों बच्चे हैं जो हर साल 10वीं या 12वीं पास करते हैं और वो अपने घरों में पहले ऐसे इंसान होते हैं जो 10वीं या 12वीं पास कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आगे जाके क्या करना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, क्या करियर्स मेरे लिए शायद सही रहेंगे। ये जो ब्रिज होता है स्कूल से लेके अपने करियर तक ले जाने वाला ब्रिज हमारे देश में है ही नहीं। तो अंतरंग वही ब्रिज है और वही काम करता है, इसीलिए हमने अंतरंग शुरू किया। Energizing and positive. Excited and motivated. So happy. Inspiring and excited. Motivated and content. Charged up. It's a proud feeling. Joy, hopeful, and a sense of purpose. I feel inspired. Excited and focused. Thrilled and motivated. It's a sense of fulfillment, a sense of joy that comes from Agency, in terms of what is it that they really want to do. Super enthused. Younger and proud. Happy. Challenging and informative. After 30 years in the corporate world, young again. Wow, I feel so amazed after seeing the responses. Depend करता है. Yes. How do you feel? Put it in the chat box. आपको कैसे लगा ये वीडियो देखकर? तो ये हम जो वीडियो में कवर किए हैं वो हमारे जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, जो भी हमारे स्टाफ्स थे, उनका 9 ईयर का जर्नी अंतरंग में कैसा रहा वो उन्होंने बताया था। तो क्या आप एक्साइटेड हैं और आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू आदित्य। आप सभी के एक्सप्रेशन देख के हम चार्जअप हो रहे हैं। Once again, I would like to welcome all the students who have joined in now. A very warm welcome. हम अभी से start करने ही वाले सेलिब्रेशन।
निकेश, तुझे पता है आज का थीम क्या है हमारे इवेंट का? नहीं मनीषा। ठीक है, मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ। टर्निंग एस्पिरेशन इनटू। अब आपको गैस करना है कि ये क्या है, आज हमारी थीम क्या है। मैं तो गेस कर रहा हूँ कि टर्निंग एस्पिरेशन इनटू मे बी जॉब हो सकता है, बट आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा थीम क्या है। टर्निंग एस्पिरेशन इनटू Yes, so many of you have guessed it right. It's turning aspirations into actions. ओ मैं तो गलत हो गया, बट मनीषा हम ये थीम क्यों चूज किए हैं? Because we do not only believe in setting aspiration, but it is also important to take one step towards your aspirations. Oh, okay, got it. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Do you know how talented our alumni are? On this day of celebration day, we have also prepared something special for you all. Really? Means you are saying we have full of dhamaka today? Yes. Okay. Let's देखते हैं कि पहली पर्ची किसकी है. So, welcome स्मृति शर्मा and उनका परफॉर्मेंस देखते हैं. तो स्मृति शर्मा. सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। वाह निकेश, मुझे तो लगता है स्मृति तो मुंबई आ सकती है. हाँ, मुझे भी लगता है कि वो मुंबई आ सकती है. ऑडियंस, आपको कैसा लगता है? क्या स्मृति मुंबई आ सकती हैं? अपने रिएक्शंस आप कमेंट बॉक्स में बताएं. यस, आ सकती है स्मृति. जैसे स्मृति ने अपने सॉन्ग के थ्रू बताया कि जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं अपने एस्पिरेशन की तरफ, यानी कि वो यकीन में बदल सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ. तो जैसे कि अभी हम भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं. कोई हमारे स्टूडेंट्स पहले जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स डिफेंस कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट अपना रिज्यूमे बिल्ड कर रहे हैं. सभी अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं. जैसे कि स्मृति ने बताया कि अपने सॉन्ग के थ्रू की मे बी फर्स्ट स्टेप आपको लगे कि यकीन ना हो कि आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं अपने एस्पिरेशन के थ्रू, बट अब धीरे धीरे वो यकीन एक हकीकत में बदल जाती है. उसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट वैल्यूडिक्टोरियन को बुलाते हैं, जो कि है रोहित पाठक. रोहित पाठक वाल्या कॉलेज से हैं एंड उनका एस्पिरेशन है इन मार्केटिंग सेक्टर. देखते हैं कि उनका करियर जर्नी कैसी रही, अंतरंग में करियर रेडी कोर्स उनकी कैसी रही. हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित पाठक और मैंने अंतरंग फाउंडेशन से अपना करियर रेडी कोर्स कंप्लीट किया है और मैंने अपने इस जर्नी में बहुत सारे स्किल्स एंड नॉलेज को गेन किया है, जो कि मुझे लाइफ में और फ्यूचर में हेल्प करेगा. और मैंने अपने मेंटर एंड फैसिलिटेटर से जो स्किल्स गेन किए हैं कि मुझे अपने वर्क प्लेस में कैसे बिहेव करना चाहिए और मुझे अपने कलीग से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए और मुझे अपने वर्क प्लेस पे अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना होगा.
और मुझे वर्क प्लेस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे एक्सप्लेन करना होगा। और मैंने अपने अंतरंग फाउंडेशन कोर्स से मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया है। प्रोग्राम के थ्रू मैंने जाना है कि मेरा करियर एस्पिरेशन मार्केटिंग में है और मेरे मार्केटिंग में मुझे दूसरों से मिलना होगा और मुझे कम्युनिकेट करना होगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेंटोर ने मुझे प्रॉपर गाइड किया है कि मुझे क्या क्या स्टेप लेने चाहिए और कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं रिलेटेड टू माय करियर, और मुझे अपने आप को कैसे अपडेटेड रखना चाहिए रिलेटेड टू दिस कोर्स। मैंने अपनी इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट ये सीखा है कि अपने प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। और मुझे बिकॉज मेरे प्रोफेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू कस्टमर, क्लाइंट एक्सेट्रा। थैंक यू अंतरंग फाउंडेशन एंड एक्सपर्ट मेरी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशली थैंक यू टू स्वाति मैम जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि अंतरंग फाउंडेशन को ज्वाइन करूं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूं। I aspire to be a marketing representative despite any problems that come by way. I am ready to face them and thank you so much. Yeah, absolutely great रोहित। and क्या हम सभी अनम्यूट करके रोहित के लिए क्लैप कर सकते हैं? Thank you so much everyone. Thank you. Yeah. So इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेट ऑफ ग्रेजुएटिंग बैचेस। जैसे कि जो हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं हम उनको दिखाने वाले हैं कि और उनके साथ ही हमारे फैसिलिटेटर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को एक कोटेशन के थ्रू बताना चाहते हैं कि उनकी आगे की जर्नी में कैसी हो, और उसको और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ कोटेशन पुट किए हैं बैच के पहले। तो देखते हैं। पहचाना है Congratulate Nuzad and all the students of Anjuman Islam College G1. हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना। Congratulate Reena and all the students of batch Anjuman Islam College G2. Wow, we have so many different students from different backgrounds. Yes. And they want to achieve different careers. Congratulations Priya and all the students of Ambedkar Junior College M1. I can see lots of businessmen in this batch. Congratulations Lavdi and all the students of Ambedkar Junior College M2. Congratulations Ibrahim and all the students of Ambedkar College M1. Here we can see an entrepreneur also. Wow. मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई। Congratulations Ria and all the students of Ambedkar College M2. दिखलाए तो तूफान कोई मंडलाए तो। Congratulations Ibrahim and all the students of Chandraban Sharma College M3. Congratulations Ipsita and all the students of Guru Nanak College M6. Congratulations Swati and all the students of JRTG batch. Wow, the students have such a great inspiration. Yeah, I can see modeling also. Congratulations Swati and all the students of Guru Nanak College batch M1. हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले।
Congratulations, Javia, and all the students of HMPJCM Batch 1. जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है. Congratulations to all the graduating batches. चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट धमाकेदार परफॉर्मेंस की ओर. तो बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस सचिन, जो कि है जो गुरु नानक कॉलेज से बिलोंग करते हैं एंड उनका एस्पिरेशन है एक्टर. देखते हैं उनकी एक और टैलेंट के बारे में, कैसी है उनकी सिंगिंग स्किल. आसमान से ऊंची, दरियों से भी गहरी मंजिलें, रहना रहे ये दुनिया, डरने वाली अंतिम सी नहीं बनी. रोके ना रुकेंगे अब तो यारा, रोके ना रुकेंगे अब तो यारा, रोके ना रुकेंगे अब तो यारा, रोके ना रुकेंगे अब तो यारा. खड़े बैठे डर नहीं, जो रख के चलते रस्तों पे है हौसले से भी तू जवाब. फैसला तू कर ले आज अपनी जिंदगी का, कर मुकाबला छोड़ दे जरा. गिर के उठे जो खड़ा वो असम विजेता, यहाँ मिट्टी से मिलता है सम्मान. लौटना तू हार के तो पीछे रहा हमें से, लगा ले आज अपनी पूरी जान. ए जवान सुन जरा, इतिहास हमारा, इंसाफ नहारा, इंसाफ नहारा. ए जवान सुन जरा, इतिहास हमारा, इंसाफ नहारा, इंसाफ नहारा. रोके ना रुकेंगे अब तो यारा, रोके ना रुकेंगे अब तो यारा. तैयारो आसमान से. Wow, can we applaud for Sachin? Let's unmute and applaud for Sachin. Super energetic song, Sachin, and also we feel like अब तो हम नहीं रुकने वाले अपने नेक्स्ट वैल्यूडिक्टोरियन को बुलाने के लिए. तो आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट वैल्यूडिक्टोरियन शायरा, जो सेम कॉलेज से हैं, गुरु नानक कॉलेज, एंड उनका एस्पिरेशन है टू बिकम अ टीचर. तो देखते हैं उनकी कैसी रही करियर जर्नी. People lose their futures, run on wrong path, and may become unsuccessful in their lives. But do we ever imagine why? Well, the answer is straightforward, because those people do not know what are they capable for, what are their future goals. I may be the one too, without Antarang. Hello, this is Saira, and today I'm gladly here to share my experience with Antarang. Today, as I look back, I realize all those positive changes I have gained after attending career ready lectures. I have become professional, responsible, committed, and hopefully somewhere on success of my career. It helped me to hear from real life role models who demonstrate their relevance and connection about the future. It helped us with the inspiration and information to make a better informed decision about our careers, and so to learn about different communication skills, personalities, aptitudes, and so on. Antaran helped me to know about my career, which is teaching, and in spite of that, to decide my plan B, that is social services. And also, obviously, we have some barriers while achieving our careers. So mine is financial issues. So the Antaran gave me solution that I could apply for scholarships, and that would be my solution towards my barrier of my career. And I aspire to become a teacher in spite of having lots of work in a short span of time. Thank you.
So glad to hear your experience, Saira. Clap for her and also put it on the chat box. How are you feeling after hearing her speech? Yes. शायरा को तो अपॉर्चुनिटी मिली अपनी जर्नी शेयर करने में। अब आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है अंतरंग के पेज पे आने के लिए। हम शाउट आउट दे रहे हैं एक स्टूडेंट्स को जो कि थ्रू आउट दिस सेशन एक एनर्जी बनाए रखेगा एंड पार्टिसिपेट करेगा पूरे ग्रेजुएशन इवेंट में। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रेजुएटिंग बैचेस को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। Congratulations Rima and all the students of Kothari G batch 7. I can see students from HR who want to achieve the career in Congratulations Swapnil and all the students of Kothari College G batch 8. Congratulations Greta and all the students of KSH JC M1 batch. Here I can see a fine artist also. आप भी एक कमेंट बॉक्स में करिए कि आपको कौन से यूनिक एस्पिरेशन मिल रहे हैं। Type it in comment box. Congratulations Kunal and all the students of LS Raheja College Mix Batch 8. Wow, microbiology. Yes. You can also put a unique career in your comment box. Congratulations Javia and all the students of MDM 15. Congratulations Shapna and all the students of MDM batch 16. Congratulations Swapnil and all the students of MDSM G11. We have many accountants in this batch. Yes. Congratulations Amandeep and all the students of Power Mix Batch 34. Keep cheering for the batches who are graduating. Yes, everyone. Congratulations Greta and all the students of Power Mix Batch 35. Congratulations Alevia and all the students of Power Mix Batch 36. Keep cheering for the students. Congratulations Amandeep and all the students of Power Mix Batch 37. Congratulations to all the graduated batches. Hooray! Yeah. Congratulations everyone.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टैलेंट ऑफ द डे की तरफ। एंड जो है कि जहीन, एंड वो अंजुमन इस्लाम कॉलेज से बिलोंग करती है एंड उनका इंस्पिरेशन है टू बिकम अ डॉक्टर। तो देखते हैं अपना हमारे फ्यूचर डॉक्टर की परफॉर्मेंस। Hi everyone, good evening to all. My name is Khan Zain Abdul Majid and I am a student of Anjuman Islam's Dr. M.I.J. Kurs High School and Junior College of Science and Commerce at Bandra. I have completed my Antarang's Career Ready program. Thank you to Nuzhat ma'am for all your support and throughout the journey, and Antarang team who gave me the opportunity to speak about graduation day theme, that is turning aspiration into actions. We all know what aspirations are, right? Aspirations are dreams, hopes, ambitions to achieve our life's goal. A strong desire to achieve something. Let me tell you about my aspiration. Firstly, I am really grateful to have known Antarang, who has guided me towards knowing my aspiration. जैसे अभी मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है, लाइक माई प्लान ए इज टू बिकम अ डॉक्टर, जिसके लिए मैं अभी 2 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ. आई एम स्टडिंग फॉर CET एज वेल एज नीट टू, एंड इन केस माई प्लान डजंट वर्क आउट, I will complete the degree of either B.Pharm or BSc, so that I can continue to be in the field of healthcare. मेरी तरह आप सबके भी aspirations होंगे, no matter how big or small they may be. Maybe it's to become CEO or obtain a promotion or simply wake up an hour earlier in the morning. But उन dreams को achieve करने के लिए you have got to be prepared to play big. That means taking those required actions to bring them in reality, and taking first step might be difficult but very important. And here I can suggest you 5 rules. मैं आप लोग को 5 रूल बता सकती हूँ जिससे आप लोगों को आसानी होगी आप लोगों के एस्पिरेशंस जानने में. फर्स्ट थिंग, you should know your aspiration. Second, make a plan how to reach your aspiration. Third, focus on it. Fourth, take actions what you have decided to achieve. Fifth, review and explore alternatives. And if you follow these 5 rules, nothing will stop you from reaching your goals. If you have not taken your steps towards your aspiration, now is the time. It's never late to start the journey. And I wish all the best to your goals, and wishing all the graduating students more success ahead. Thank you. मुझे तो ये टॉक बहुत अच्छा लगा. ऐसा लग रहा था मैं टेड टॉक सुन रही हूँ. बहुत इंस्पायरिंग था. Dear students, don't leave. We have lots of things organized for you. Yeah, we have some quizzes, some hackathons, जिसके थ्रू आप कुछ नया लर्निंग्स ले सकते हैं, एंड लर्निंग के साथ साथ आप फन भी कर सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. ज़हीन के जो क्लैरिटी थी अपने फ्यूचर को लेके वो बहुत अच्छी थी. तो इसी के साथ हम पवित्रा को बुलाते हैं, जो हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है, लास्ट वैलेडिक्टोरियन है. वो अपना अंतरंग जर्नी, उनकी करियर रेडी जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या सीखा, वो जानते हैं. Hello, my name is Pavitra Yadav. I'm 17 years old. My journey in Antarang Foundation started in 2021. I am graduated in Career Ready course from Antarang Foundation. It has been a great platform for me to explore many new things related to my career and mold myself for a bright future. I have learnt work ethics, professional behavior, and I have improved my communication skills too. Most importantly, the learnings from Antarang Foundation, which will stay forever, is to be honest with myself. My aspiration is to become a HR manager. This means recruitment of candidates, updating and designing the existing company policies, coordinating with professionals, etc. To achieve this, I will pursue BMS specialization in HR management. Antarang Foundation. What?
Hi everyone. Sorry for the slight hiccup over there. I think छोटा सा network problem था. We'll continue with the presentation. Just give us 10 seconds. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी लाइक टू कंटिन्यू। वाह निकेश, मुझे ये वीडियो देख के मुझे अपनी करियर जर्नी याद आ गई, कैसे मैंने ट्रेनिंग ली थी एंड मुझे कैसे एक्सपीरियंस था। Okay. With this, let's welcome the last set of our graduating batches. Congratulations, Amandeep, and all the students of SNJCM 1. Congratulations, Swapnil, and all the students of Valia Junior College, Mixed Batch 3. Wow, arm service. Congratulations, Jasmine, and all the students of Valia Junior College, Mixed Batch 4. Wow, we have students who want to become businessmen, lawyers, doctors. Congratulations, Ibrahim, and all the students of Valia Junior College, Mixed Batch 5. Congratulations, Amandeep, and all the students of Valia Junior College, Batch 6. Congratulations, Rima, and all the students of Valia Junior College, M Batch 7. Congratulations, Swati, and all the students of Valia College, M10. Keep cheering for all. Yes, everyone. Wow, in this batch we have professors and teachers. Yes. Congratulations, Kunal, and all the students of Valia Batch M11. Congratulations, Ria, and all the students of Valia Batch M12. We have so many accountants in this batch. Yeah, So good to entrepreneur have too. Yeah. Congratulations to all the graduating batches. Yes. Hooray! Congratulations, everyone. अंतरंग ने हमें एक खुला आसमान तो दिया है,
बट उस आसमान में उड़ने के लिए जो पंख है वो हमारे फैसिलिटेटर्स ने दिया है। उन्होंने हमें एक इन्फॉर्म करियर डिसीजन लेने में हेल्प किया। तो so I would like to invite Yogesh from our career ready team to acknowledge their hard works. Hi Nikesh, Mani. Great start to the session. Hi everyone. I hope you're having a lot of fun. So I'll take this section forward. The year has been extraordinary and has pushed all of us to accept the new norms. While it was full of uncertainties, there were a few amongst us who embraced this change wholeheartedly and created the magic within the classrooms. They pushed their own boundaries and their students to grow and become career ready. Yes, they are none other than our champion facilitators. Today, let's understand that it's a critical time for all of us to acknowledge and recognize a few notable performances. Their very intent every single day with which they stepped into the classrooms created that magic for our students and helped them transition into the career of their choices. So let's see who all are there amongst the nominations for the respective sections. Nikesh, can I have the slide, please? Next slide. Here are the facilitators who enabled close to 2-level jump in the student career readiness score. What means is they actually ensured maximum student learning outcomes within their classrooms. And these are Reema Fernandez, Swati Agarwal, and Priya Kulwanta. Many congratulations, three of you. Can we move on to the second slide, please? Then there are facilitators who ensured at least 90% of the students successfully complete the career ready program, which is very critical. And they are Alefia Sohakurwala and Greta Castellino. Many congratulations, Alefia and Greta. Then there are few who ensured at least 80% of the students have conversations with their mentors about their career plans, which is so important as far as transition journeys are concerned. And they are Kunal Shinde and Reema Fernandez. Congrats, Kunal and Reema. Great work. Now, on this note, it is extremely important for all of us to know there were a few champion facilitators who ensured that their students actually score as many points on all the three fronts. That is, they ensured their students learn the maximum within their classroom. They ensured that the students take up linkages as well as successfully complete the program, and also to ensure that the students have conversations with their respective mentors. And these three champion facilitators for the cycle are, yes, the champion facilitators are Zahavia Kagalwala, Reema Fernandez, and Swati Agarwal. Each one of them ensured their students perform exceptionally well on all the three fronts. So congratulations, Zahavia, Reema, and Swati for your performances. Please all cheer up for the facilitators. Yes, and it becomes extremely important. While there were some who got the mention here, there were others who equally put in their hard work and their efforts were second to none. So I would like to present a slide which has the photos of each one of the masters and the magicians at Antarang who create the magic within the classroom day in, day out. Can we have the next slide, please? Yes. So all the facilitators, 15 facilitators who did their bit towards moving their students to the career readiness journey. Thank you so much. Thanks a lot. We look forward to working closely with you and learn a lot from you each day. Thanks. Thank you, Yogesh, for acknowledging our facilitators. Let's. I would like to invite Swin from our fundraising team to acknowledge our donors. Hello, everyone. Thank you, Nikesh and Manisha, and thank you, Yogesh, for recognizing the facilitators. I hope you can hear me very well. Can we move on to the next slide, please, Nikesh? This year has been extraordinary in terms of the programs, Antarang programs turning from online to offline, फिर online. आप सभी बच्चों को पता है कि कैसे हमारे schools कभी online थे, कभी offline थे.
Despite this, what has been our strength has been all of our donors, जिनको हम special thanks कहना चाहते हैं to constantly support us, not only in terms of the valuable funding which the donors have provided to us, but also their strategic inputs, their constant feedback, and also the encouragement. In fact, today we have a few of our donor representatives on call, and वो आप सभी से 2 words end में share करेंगे. We would like to mention some specific donors who have helped us make Career Ready program a success, and these are a few donors that we would like to thank from the bottom of our heart. JP Morgan, UBS Securities, LinkedIn, Koita Foundation, AT Chandra Foundation, Social Venture Partners, SVP India, and we have their team on call today, and I'll be introducing them to you. Asdorf, HBS, British Asian Trust, Empower, Mid Valley, SG, and AFF also. So I would like to thank all the donors for being the constant support and helping us take this Antarang's 9-year journey ahead, onwards and upwards. I would like to invite Vinay or Bhavin, who are on call, to say a few words of encouragement for our Career Ready graduates. Vinay or Bhavin, can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, yes, Vinay. Yes, okay. Please. Bhavin, do you want to go, or would you like me to say a few words? Okay, maybe I'll start, and then Bhavin, please jump in. Would love to hear from you. Good evening, everyone. बधाई हो आप सबको, as well as Team Antarang को अपने 9th anniversary पे. I have been privileged to be part of this journey for the last few years, and personally for me, it's been every interaction with Priya, Rita, and team is an opportunity to learn as well as be inspired. As well as from all of you who are participants in Career Ready and Career Aware programs, it's always inspiring to hear from you. It's wonderful to hear about the aspirations and what you've learned at Antarang. You know, doctors, I heard, marketing, accounting, hospitality, various careers. Many of you will go on to earn degrees, diplomas, learn from Antarang's programs, from internships, from work experience. So you'll have an opportunity to learn going forward. But being successful in any job would involve learning a lot of skills relevant to the job. So if you want to become a doctor, you have to learn skills relevant to being a doctor. If you want to become a CEO, you have to learn a lot of skills relevant to managing a team. However, the reality in life is that some will go on to be super successful, some less so, some go on to become great leaders in their organizations, in their communities, even within the families, and have huge impact. So what are those qualities that make some leaders so impactful, right? Our team at HPR has done research and identified 7 capabilities, which we call leadership superpowers. And I wanted to share that with you. They're called superpowers because they're true for any job, any industry, any location, and any age, right? Whether you want to become a student leader or a CEO, you need these 7 superpowers. And they're also superpowers because unlike accounting or medicine or law, these are not taught in any college or training program. It is really hard to teach, but it can be nurtured or developed within each one of us, right? So what are those superpowers or Mahashaktis? I won't bother explaining each one of them, but when I say them, simple to understand. First one is integrity, right? Imandari, sachai. Second, determination, dritta. Third, courage, sahas. Fourth, empathy, sahanubhuti. Fifth, self-awareness, atma jankari, right? Sixth, optimism, जो कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद रखते हैं और दूसरे को भी उम्मीद देते हैं. And lastly, curiosity, जिज्ञासा,
right? To learn new things, to find out answers to new things. Today, all of us can get knowledge from Google, but you have to have the curiosity to ask questions and learn. So simple, right? These are simple to understand, but not so common, especially when you put all of them. So as you go on to do great things in education in your job, also pay attention to opportunities to nurture and develop these superpowers in you. You know, it isn't there in all of us. We need to be aware of it and develop. So it's the secret sauce that makes the difference between good and great. So thank you. Hardik Shubhkamnaye, all the best to everyone and to Team Antarang. Thank you. Thank you so much, Vinay, for those kind and valuable words. It were truly inspiring, and we can see our students also responding to the same. And now we move on to recognizing our second category of important stakeholders, which are our college partners for Career Ready. I would like to invite Sreyoshi from the Career Ready team to take it ahead from here. Thank you so much, Surendra. Can you change the slide? I want to start by saying that ये साल हमारे लिए बहुत ही अलग था. It was a very different year for us. We were working with junior colleges for the first time. हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि हम ऑनलाइन सेशंस कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स प्रोग्राम करना चाहेंगे या नहीं, टीचर्स अलाउ करेंगे या नहीं, पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं. But इन सारे challenges को solve करने के लिए our partners, our college partners were very helpful. Without them, we wouldn't have able to reach the students. They understood the program, they received the program really well. और उन्होंने स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम का वैल्यू समझाया, उन तक पहुंचने में हमारी मदद की. So we would like to give a huge shout out to all of the college partners who have made this happen for us this year. Can you change the slide? Just me, I can't see the slide. Yes. Thank you so much, Anjuman Islamia College, Chandraban Sharma College, Hansraj Morarji College, Alice Raheja College, Shri MD Mahila College of Arts and Commerce, Walia College of Commerce, Gurukul Junior College, Maharshi Dayanand College, Dr. Ambedkar College of Commerce and Economics in Vadala, Guru Nanak College in GTB, Kothari College of Management Studies in Chembur, Sri Narayan Guru College in Chembur. Thank you so much, everyone. We would also like to appreciate a few special partners जिन्होंने ये साल हमारा बहुत सारा support किया and who have worked with us on with so many students and encouraged so many students to participate. Can you change the slide? Yes, our first category of award is award for maximum participation. Yes, next slide. The two colleges that have won this award are Gurukul College and Guru Nanak College. इन दोनों कॉलेज का ही मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी बिकॉज गुरुकुल कॉलेज वाज द फर्स्ट कॉलेज जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम में इसके लिए टाइम निकाला, जिसकी वजह से पूरा 11th स्टैंडर्ड और पूरा 12th स्टैंडर्ड इस कोर्स को कर पाया ड्यूरिंग द क्लास आवर्स. So thank you so much, Gurukul College. And Guru Nanak College was also our first partner throughout in the academic year. And so thank you so much, Gurukul College, and congratulations, Guru Nanak College. Our second category is award for maximum participations of students जिन्होंने career ready course को complete किया है, graduate किया है. The first winner is Walia College, and the second winner is Dr. Ambedkar College of Commerce and Economics. Both of them have been really strong partners, really great motivators to students, have been promoting the program so vigorously throughout the year. We have had so many batches with both of these colleges. So congratulations, Walia and Ambedkar College. The last category is award for being the most proactive coordinator. Coordinators के support के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं. And the first winner of this award is Maharshi Dayanand College, Parel में. And the second one is Anjuman Islam College. जिनके coordinators इतने proactive थे. They have coordinated with us throughout the year. They've made communication so easy. वो लोग students के साथ, facilitators के साथ, operations के साथ coordinate करने में हमें बहुत मदद की है. So thank you so much and congratulations to all of the winners. And now hand it over to Pratha for the next bit. Thank you so much. Thanks a lot, Sreyoshi.
And what a wonderful way to sort of bring our career ready program journey to a close. So before we go ahead, यहाँ किसको मजा आ रहा है? क्या मुझे unmute करके थोड़ी आवाज सुनाई देगी? Chat पर मुझे hi, yes, no. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Awesome. Great. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you. Thanks for unmuting everybody and thanks for sharing on chat. So जब हमने इतना Yes, ma'am. enjoy किया है और हमने इस करियर रेडी प्रोग्राम के साथ इतनी सारी चीजें सीखी हैं, थैंक यू तो बोलना बनता है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. तो सब Yes, ma'am. Let's start with thanking ourselves, right? Thank you to each of you, all of our students जो आज हमारे साथ यहाँ पे हैं, and a huge congratulations कि आपने करियर रेडी प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया. हमारी अभी यही विश है कि अब आप आगे बढ़ते रहें और रुके नहीं. तो अपने आप के लिए और अपने फेलो ग्रेजुएट्स के लिए एक जोरदार राउंड ऑफ अपलॉज चैट पे भी आप डाल सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी अपलोड कर सकते हैं. Thank you all of our valedictorians and Safarnama. आप सभी ने हमारे साथ आपके एक्सपीरियंसेस और आपके परफॉर्मेंसेस शेयर किए और हमारा दिन सिर्फ एंजॉयबल नहीं बल्कि इंस्पायरिंग बना दिया. So thank you so much for all of those who performed today and who spoke to us today. A big thank you next is to all the people जो हमारे प्रोग्राम के बैकबोन हैं और जिनके एनकरेजमेंट से आप सभी भी यहाँ हैं और हम भी रोज रोज कुछ नया सीखते हैं. हमारे करियर रेडी के फैसिलिटेटर्स, चैट पर अगर आपके बैचेस के फैसिलिटेटर्स को आप शाउट आउट देना चाहेंगे तो उनका नाम लेकर जरूर शाउट आउट कीजिए. Thank you so much to each of you for the encouragement that you have shared with all of our students. I can see some names coming up on the chat. Awesome. Thanks a lot. I also want to thank our college and NGO partners and our supporters from various communities जो ensure कर रहे हैं कि उनके community के youth ये ready है with all the skills to be employable and to be self-reliant in the future. Another invaluable contribution is from our donors. Thank you to each of you. JP Morgan, Empower, Microsoft Corporation, SVP India, ATE Chandra Foundation, HT Parekh Foundation, Reliance Foundation, UBS Securities, LinkedIn Corporation, Harvard Business School, Sheikh Jafar and Nimatullah Ibrahim Family Foundation, Nirlon Limited, and Mid Valley Health Services Private Limited. इन्हीं के कांस्टेंट सपोर्ट से ही हम इतने सारे यूथ तक रीच कर पाए हैं. Thank you for supporting us today so that all of you can build a self-reliant tomorrow. अब हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं, आपकी आवाज चैट पर और अनम्यूट करके भी बुलंद है, तो ऑब्वियसली यूथ की आवाज भी हमेशा बुलंद रहनी चाहिए कि नहीं अंतरंग में. And that's why the next big thank you is to our youth advisory board members for providing their insights and input so that we don't lose sight कि हम किनके साथ और किसके लिए काम कर रहे हैं. Thank you also to Antarang's board members, friends and supporters, many of whom have joined us today. Team Antarang is always happy and looking forward to see you all over here. Finally, a special mention for Antarang teams who make Career Ready happen. The Career Ready and Student Outcomes team, CNT and M&E teams for supporting with content and capturing essential data. Thank you also to the Graduation Organizing Committee and the Fundraising and Communications team and our lovely hosts today for arranging this graduation program for our students. Now, if you are thinking कि हमने सबको thank you बोल दिया है और अब टाटा बाय बाय होने वाला है, absolutely not. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्तों. We have something very thrilling planned for you, especially for all our Gen Z gathered over here. क्या मुझे आप बता सकते हैं आप कितने एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए जो अगला सरप्राइज आपके लिए आने वाला है? तो आपके इमेजिनेटिव को बांध लीजिए. एंड आई नाउ इनवाइट श्रेयोशी टू टेक अस थ्रू द नेक्स्ट बिट. थैंक यू सो मच प्रथा. यस, काफी लोगों के एक्साइटमेंट मुझे सुनने को मिले इस इवेंट के लिए. इस इवेंट का नाम ही जेन जी थिंक जी है, जैसे आपको दिख रहा है. सबसे पहले मुझे कोई बताएगा कि जेन जी का मतलब क्या है? कौन है जेन जी? जनरेशन.
और कौन है ये जनरेशन? मिस जनरेशन हम लोग आप लोग है ना। बेसिकली यंग पीपल, एनी पर्सन टेक्निकली देखा जाए तो 1997 के बाद जो भी बॉर्न हुए हैं 2012 तक, वो आता है जनरेशन जी में। बेसिकली यंग पीपल लाइक यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट, आर गोइंग टू बी द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, इस इवेंट का नाम है अंतरंग हैकाथॉन। हैकाथॉन का मतलब क्या होगा बताएगा? हैक करने का मतलब क्या होता है? कहाँ सुना है आपने हैक करने का? कंप्यूटर में सुना होगा कभी किसी ने, मूवीज में, यार ये हैक कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हैक कर लिया ऐसा, कंप्यूटर हैक कर देते हैं। ठीक है, और क्या सुना है? मोबाइल हैक, कब्जे में लेना किसी ने लिखा है चैट पे, मोबाइल फोन को कंट्रोल करना लिखा है किसी ने, डिकोडिंग समथिंग लिखा है किसी ने, यस, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन लिखा है। तो मैं डिकोडिंग इंफॉर्मेशन वाले, यस अरविंद वो है मैम, किसी की प्राइवेसी को देखना हैकिंग है। ओके, प्राइवेसी को स्टील करना या एक्सेस करना हैकिंग होता है। मैं थोड़ा ब्रॉड मीनिंग में जाऊंगी हैक करने के, और गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन विदाउट परमिशन। थैंक यू सो मच राधिका। आई विल गो with some of the answers that I have heard. सबको मिला के जुला के the answer that we're looking for is to decode something or to crack something, right? किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन निकालना या उसको क्रैक करना, उसको डिकोड करना, वो होता है हैक करना। तो हम लोग अभी एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसको हम हैक करने का ट्राई करेंगे। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैन वी सी द नेक्स्ट स्लाइड? what are we going to do in this event? क्या होने वाला है इसमें? एक यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इसमें कैसे करेंगे और कौन करेगा? 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस टीम्स में स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे लोग हैं, एलुमनाई है जिन्होंने करियर रेडी कोर्स खत्म किया है। इस टीम में और भी लोग हैं जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं इन अदर वेज, ये जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं वो इस टीम के पार्ट रहेंगे। और हम इस टीम में मिलके इस यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सोल्यूशन निकालेंगे। We will find these teams will find creative ways to find the solution of this youth related problem. The main discussion, the main thinking, the main idea will all be youth led. So आपको इसमें participate करना है और आपको ही इन teams को judge करना है। ठीक है, let's move to the next slide. हमारे टीम्स में कौन रहेंगे? ये 6 टीम्स है हमारे, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम E and team F. If you look at the screen, कुछ टीम्स में मेंटर्स है, कुछ टीम्स में डोनर्स है, कुछ टीम्स में फैसिलिटेटर्स है, और जो मेन इंटीग्रल हिस्सा है जो कॉमन है अक्रॉस ऑल द टीम्स आर आल्सो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, पीपल हु आर ऑलरेडी इन दिस कॉल। आपके बैच मेंबर्स होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, ऑल ऑफ दीज पीपल आर पार्ट ऑफ दीज टीम्स एंड दे आर गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम। और इस टीम में अवार्ड्स कैसे डिसाइड होंगे? कौन डिसाइड करेगा कौन जीता है? सबसे अच्छा सोल्यूशन किसका है, कौन डिसाइड करेगा? आप लोग गेस करो, हु विल जज दिस? प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? यूथ रिलेटेड, राइट? ओके, सो जज भी कौन करेगा? यूथ, हम लोग, राइट? या आप लोग। सो जेन जी जो यूथ है इस कॉल में, वो ही इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, और आप ही लोग, जो लोग ऑडियंस है, वो ही इसके लिए वोट भी करेंगे। कैन यू मूव द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, सो पार्टिसिपेशन के रूल क्या है, हम इसको कैसे खेलेंगे इस गेम को, एंड इस इवेंट में कैसे पार्ट लेंगे? जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स है, ऑल द 6 टीम्स विल बी पुट इनटू ब्रेकआउट रूम्स। उनके पास 15 मिनट रहेंगे टू थिंक ऑफ अ क्रिएटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और एक उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन को उनको क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट भी करना है आप लोगों के सामने। द ब्रेकआउट रूम विल क्लोज आफ्टर 15 मिनट्स एंड सब टीम्स वापस आ जाएंगे, एंड ऑल ऑफ द टीम्स विल गेट 2 to 3 minutes टू प्रेजेंट देयर सोल्यूशन टू ऑल ऑफ यू, व्हिच इज द ऑडियंस। नेक्स्ट स्लाइड। एंड ऑडियंस क्या करेगी इसमें? आप लोग इसमें जज करेंगे। जैसे आपने बताया कि आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जज भी आप ही करेंगे। आपके स्क्रीन पे जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, हर टीम के प्रेजेंटेशन के बाद आपके स्क्रीन पे पोल आएगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि क्या आपको उनका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा,
would you be willing to attend future presentations, or did you like the solution, how much did you like the solution? ऐसे टाइप के questions आपके स्क्रीन पे आएंगे और आपको उनको सिर्फ रेटिंग देनी है, and we will figure out who the winners is based on your rating, right? बिल्कुल ऑडियंस पोल की तरह. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. यस, सो आपको अभी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे, उसको आप समझ लीजिए जब तक वो लोग फिगर आउट कर रहे हैं आंसर्स अपने अपने ब्रेकआउट रूम में 15 मिनट के लिए. तब तक आप हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और हम एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे which will be very fun. It will be a quiz that all of you can participate in. In that 15 minutes, they will present they will come up with solutions और आप अपने हम quiz खेलेंगे, and after the 15 minutes are over, you will listen to each of the presentations carefully और आप उसको जज करोगे और आप उसको रेटिंग दोगे. ठीक है. Next, we will now understand the problem statement. किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें निकालना है? What are these 6 teams going to find a solution to? Millions of students in India dropped out of high school due to COVID-19. This will make them difficult for them to pursue the next steps towards their career aspirations. How can we ensure that the students get back to school or pursue other ways to achieve their aspirations? बहुत सारे students हैं जिन्होंने high school से drop out किया है, जो education को continue नहीं कर पाए हैं because of COVID-19, right? 2 साल में हमने बहुत सारे students को, आपके friends को देखा होगा, आपके community में देखा होगा, students जिनको school छोड़ना पड़ा है. और अब वो कैसे बने, उनको जो भी एस्पिरेशन था, जैसे आप लोगों के एस्पिरेशंस थे सीए बनना, एमबीए करना, डॉक्टर बनना, राइट? If all of those people also had similar aspirations, लेकिन अगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं, अभी वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपने एस्पिरेशन की तरफ आगे बढ़े, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि वो 6 टीम्स डिसाइड करेंगे अपने अपने ब्रेकआउट रूम्स में. So now I will request the host to put the teams in the breakout room and start the timer. Yes, Yoshi. Thank you. We'll just take another 1 or 2 minutes for the participants to join in and begin the breakout rooms. In the meanwhile, if the audience or the participants or the donors, mentors, if they have any questions related to the hackathon or the problem statement, please यहाँ पे clarify कीजिएगा. We have 2 to 3 minutes for that. Thank you. कितने लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया है? Can I see a thumbs up or yes on chat? Okay, I see a couple of yeses on chat and I see a lot of thumbs up. अच्छा, कितने लोगों ने ये प्रॉब्लम होते हुए देखा है? Can I see a yes or no on chat? अपने आसपास, अपने फैमिली में, अपने कम्युनिटी में, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ. Lot of people have seen this, right? Okay. Awesome. Some people have written no. Most people are writing yes. और कितने लोगों को लगता है अब इस प्रॉब्लम का हमें ही मिलके सॉल्यूशन निकालना चाहिए? Okay, awesome. A lot of yeses on chat. Love the energy. अब सब लोगों को लगता है कि ये कलेक्टिव एफर्ट है हम सभी को, बिकॉज हमारे पियर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट? हमारा यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमसे रिलेटेड, सो क्लोज टू होम द प्रॉब्लम इज. वी शुड बी टेकिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन कि इसका सोल्यूशन हम फाइंड करें, चाहे वो सोच के हो या फिर हमारे ओपिनियंस शेयर करके हो. किसी ना किसी तरीके से हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम इसमें एक सोल्यूशन ढूंढ के निकालना चाहेंगे. We're just waiting for the breakout rooms. Yes, please.
chat पे किसी ने question किया है. Yes, Prince, you can ask the question. No problem. What all did we cover before you joined? So हमारे जितने भी graduating students थे, सब batches को हमने felicitate किया, उनके लिए congratulations messages share किए, and some of the people from each batch were valedictorians जिन्होंने अपनी journeys share की, अपने ways में अपने careers aspirations को express किया. There were some performances that we had, and उसके बाद हमने पार्टनर्स को, कॉलेज पार्टनर्स को, डोनर्स को, फैसिलिटेटर्स को कांग्रेचुलेट किया, अप्रिशिएट किया जिन्होंने इस जर्नी में हमारा साथ दिया है. एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द हैकाथॉन इवेंट, जहां पे हम एक यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन निकालेंगे इन 6 टीम्स, एंड ऑडियंस विल बी वोटिंग ऑन द बेस्ट सोल्यूशन. Hi, Shreyoshi. Thanks for the brief. Before we move on to the hackathon, the breakout rooms are created and everyone is ready to begin. We would like to just pause and acknowledge one facilitator who the Career Ready and the CNT team would like to acknowledge. I request Pratha or Yogesh to briefly do that. Pratha and Yogesh, can you take that up, please? Yes. Thank you, Surendra. Can I share my screen? Yes, sure. Yes. All right. So to everybody else, before we move on to the hackathon, we'd like to acknowledge another facilitator जिनका नाम कहीं miss out हो गया था, and we apologize for that. Duriya Jamali, thank you so much for your contributions to the Valia JCM 8 batch. And I'm going to share my screen to show you our graduates from the Valia JCM batch as well. We have students and from both these sets of students, and thank you so much. If any of these batch students are here, do share shout outs for Duriya, and also chat पे लिखिए कि उन्होंने आपके learnings को कैसे contribute किया. And yeah, I think that's about it. Thanks a lot, Duriya. Thanks a lot also for being patient, and everybody else. Enjoy the hackathon. Thank you. Back to you, Shreyoshi. Okay, have the breakout rooms begun? All right. I am now for the participants, which includes the students, the YIB members, our donor partners, mentors, and expert speakers who have signed up for the hackathon. I have assigned you 6 breakout rooms, team A, B, C, D, E, F, and you have exactly 15 minutes, as Shreyoshi had mentioned, to brainstorm and come up with an exciting, smart solution, and then present it to our audience. I'm opening the breakout rooms now. You should see it at the front of your screen, and please join the team which is assigned to you. Let me know if you can see the participants, the breakout rooms in front of you. Not yet. Okay, just give me a minute. Let me try again. Just give us a minute. You should be able to see the breakout rooms in another 30 seconds. Just give us 30 seconds.
Yes, I've opened the breakout rooms. The participants, I have started moving to the breakout rooms. For some participants who cannot see anything on their screen, just wait until you can. Others who can see, I would request you to join the breakout rooms right away. Shreyoshi, in the meanwhile, you can begin with the quiz for the audience. Okay, thank you. Can we move to the next slide? Nikesh? Okay, before we move to the next slide, I will just go ahead with the rules for the game. 15 minutes mein the teams will be coming up with a solution. But what we will be doing in those 15 minutes is to play a very easy, very fun, but very competitive quiz, जिसमें आप सब हिस्सा ले सकते हैं. What we will be doing is you will all have 30 seconds to answer. जो भी खान अरमान, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, can you take a pen and paper and scribble there? और आप स्क्रीन पे मत कीजिए please, we can't see the rules really well. Arman, are you there? Thank you. Okay. So what we'll do is मैं एक question दिखाऊंगी स्क्रीन पे. आप सबके पास 30 seconds होगा to figure out what the answer is. जो भी chat पे the word answer लिखेगा, that first 3 people to do that, उन लोगों को answer करने का मौका मिलेगा उस question का. We will only accept the response अगर आप answer शब्द को लिखेंगे चैट पे. अगर आप अनम्यूट करके बोलेंगे तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आपको वेट करना पड़ेगा till I finish saying the question out loud and then put your word answer on the chat. And each question will have 1 point. And जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर होगा. हर क्वेश्चन पे 3 responses मैं लूंगी. And after all of the 3 responses are done, only then we will say what is the right answer. ठीक है? So can someone repeat the rules for me? सबको समझ आया rules क्या है? Yes, ma'am. Okay. Can someone say कि हमें chat पे क्या लिखना है to give an answer? हम आंसर कैसे दे क्वेश्चन का? What do we have to do for that? Not raise hand. मैम चैट पे आंसर लिखना है. Right answer. Right answer नहीं लिखना है. Though you have to write the word answer. जैसे मैंने अभी चैट पे लिखा है, अगर आप देखेंगे. Yes, ma'am. तो आपको ये आंसर लिखना है. जो वर्ड है आंसर उसको आप चैट पे लिखें. ठीक है? Yes. Okay. Don't write the actual answer. You just have to write the word answer and then जब मैं आपका नाम लूंगी कि कौन कौन आंसर करेगा, only they will unmute and they will share the answers to those questions. ठीक है? Okay. Can we the breakout rooms begun? Should we start? The breakout rooms haven't been assigned yet, so we're still in the breakout rooms have been assigned for the participants who joined later. We are doing it right away. Just yeah. Shreyoshi, you can begin, and we are adding the participants who have joined later. We are adding them to the breakout rooms. Okay, ठीक है. Can we have the first question? Just 1 second. Facing a little bit of error. Yeah, the first question is, who is the CEO of the company जिसका logo नीचे दिया हुआ है? We are starting with a very easy, very simple question. I have already gotten the first 3 responses. Who is, 1 second, Rohit, Yashoda and Arman. तो सबसे पहले रोहित अनम्यूट करके आंसर बताएंगे, then Yashoda, then Arman. Okay? सबने वार्म अप कर लो. रोहित was really quick. Yes.
Who is the CEO of the company whose logo is given below? रोहित, आपका आंसर क्या है? You have another 10 seconds to answer. Yes, Rohit. You're on mute. हेलो मैम। Yes. मैम आप म्यूट पे है रोहित। Okay, we will move on to Yashoda. You can give the answer. Ma'am, Sundaram Pichai. Okay, that is Yashoda's answer. And the third person was, who was the third person? Can you help me, Shaheen? Yes, Arman. Tim Cook. Okay. And the right answer is, chat पे कोई बताना चाहेगा? I think some people have already mentioned it. It is Tim Cook. So congratulations, Arman. You get the first point. Yes, a lot of people have mentioned the full name also. Thank you, everyone. सबको समझ आ गया कैसे करना है? आपको ये शब्द लिखना है आंसर। यशोदा और रोहित और अरमान ने सबसे पहले ये वर्ड लिखा था, and then they got the chance to unmute and share their answers. ठीक है? We will move on to the next question. Okay, Reliance Commercial Corporation was founded by Dash. किसने फाउंड किया है Reliance Commercial Corporation? Krishna, Arman, and Siddhi get to answer the answers. Krishna, you can go ahead. Dhirubhai Ambani. Sorry? Dhirubhai Ambani. Okay. The next answer will be given by Arman. Ma'am, Dhirubhai Ambani. Okay. And Siddhi? Dhirubhai Ambani. Okay, all three of them have mentioned Dhirubhai Ambani, and we have also had this answer on chat, which is Dhirubhai Ambani, and the correct answer is also Dhirubhai Ambani. Congratulations, all three of you. Correct answer. Next question. Okay, which bank is the guardian of all banks in India? कौन सा ऐसा बैंक है जिसको बोला जाता है कि वो सारे बैंक्स के गार्डियन है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बहुत लोगों ने आंसर लिखा है. Okay, Arman, Sana, and Sonal are the three people who can answer. I think Arman has really cracked writing this RBI. Answer on chat. Okay, RBI किसी ने Arman ने बताया है. Sana? Sana? Are you there? Sana Sheikh? Okay, आपने chat पे लिखा है शायद. Guys, don't write on chat. जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको बताने का मौका तो दो, नहीं तो आप लोग ऐसे ही बता रहे हो. And the last person was Sonal. Go ahead, Sonal. Reserve Bank of India, RBI. Reserve Bank of India. So both Arman, no, all three of you actually, because I am taking the answer that Sana has put on chat, but आपको unmute करके बोलना पड़ेगा next time. So Sana, Arman, and Sonal get a point for RBI, which is the correct answer. Congratulations, all of you. And बाकी लोग उनके आंसर बोलने से पहले chat पे मत लिखो. They will get the answers otherwise. If all three of them don't get the answers, I will move on to open the forum and any one of you can answer. ठीक है? We'll go ahead with the next question, which is, आपके टूथपेस्ट में नमक है? Colgate. किसका है? आप अनम्यूट करके नहीं बोल सकते हैं. किसने लिखा है आंसर सबसे पहले? शाहीन, are you there? Can you help me? Because okay, Krishna, Tanishka, and Varda. Okay, we have three almost new people who are doing this this time. Krishna, Tanishka, और Varda. आप लोग आंसर दे सकते हैं. Krishna, starting with Colgate. Colgate. Okay, Colgate. Tanishka? Colgate. Colgate. Varda? It's Colgate. It's Colgate. और आपका आंसर सही है. The tagline for this, the company जिसका ये tagline है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, is by Colgate. So all three of you get 1 point. Congratulations. We'll move on to the next question. अपने fingers, fastest finger first हम करेंगे. Okay, who is the male brand ambassador of Kalyan Jewellers?
कल्याण ज्वेलर्स के ऐड अगर आपने देखे हैं, who is the ambassador of this? Krishna is the first one, Vardha is the second one, and Shafaq. And Arman is the third one. Krishna? Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन बोला है कृष्णा ने. ओके, कल्याण ज्वेलर्स के एम्बेसडर. पर्दा के बाद शफाक is third one. Who is the third one? Shafaq. Okay, ठीक है. So Varda is the next one. Thank you, Shaheen. Mr. Amitabh Bachchan. Mr. Amitabh Bachchan. Okay, and the third person is Shafa. Shafaq ने but answer लिखा था Shaheen. That's why I said Arman is the one. Okay. Yeah, Arman, you can go ahead. Arman. Sorry? अमिताभ बच्चन मैम. अमिताभ बच्चन, ठीक है. ऑलरेडी बहुत लोगों ने चैट पे लिख लिया था और जिनको पता भी नहीं था आई थिंक उनको पता चल चुका है. एंड ऑल थ्री ऑफ यू हैव द सेम आंसर व्हिच इज द करेक्ट आंसर. अमिताभ बच्चन, दी अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कल्याण ज्वेलर्स. करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ओके, नेम द बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज ऑफ द 21st century. सीरीज है ये एक बुक्स की जो सबसे ज्यादा बिकती है इन द 21st century. What is this book? Three people are, oh God, Krishna, Vardha, and Pavitra. Okay, Krishna, Vardha, and okay, Harry Potter is the first answer. Vardha? Harry Potter, ma'am. Harry Potter. Okay, Pavitra? Ma'am, as they said, it is Harry Potter or Langdon adventure series. You have to tell me one answer, Pavitra. Then I'll go with Harry Potter. You'll go with Harry Potter. Okay, we have gotten a couple of Harry Potter answers on chat also. And what's the correct answer? It is Harry Potter. Congratulations all three of you. आपका आंसर सही है. Harry Potter series जो है वो 21st century में सबसे ज्यादा सेल हुई है. This is the series of books which was sold the most. So you all answered correctly. We'll move on to the next question. सबको एक point मिलता है इसके लिए. Which company's logo is this? ये ब्रांड अगर आपने कहीं देखा होगा, किसका लोगो है ये? अरमान, पवित्रा and Krishna. Innova. Okay. Arman has said Innova. Pavitra? Pavitra? Are you there? Hello. Yes. Toyota, ma'am. Toyota. Okay. And who was the third one? Krishna was the third one. Krishna. Thank you. Krishna, your Innova. Your answer is Innova. So we have two Innovas and we have one Toyota. Chat में कोई लिखना चाहेगा आंसर क्या है? Because we've had different answers. 2-3 लोगों ने लिखा है Toyota and audience ने correct guess किया है. It is Toyota. So Pavitra gets the point for this. Congratulations, Pavitra. Toyota Innova कंपनी का एक कार है, बट ये जो एक्चुअल लोगो है वो है टोयोटा का, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका ये लोगो है. ठीक है, नो प्रॉब्लम पवित्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अमूल का एड का स्लोगन क्या है? अरमान ने लिखा है आंसर. रोहित एंड श्वेता. ओके, वी हैव some new people. Arman, you can go for it. अमूल दूध पीता है इंडिया. Okay. अमूल का स्लोगन है, अरमान ने बताया है, अमूल दूध पीता है इंडिया. रोहित? अमूल दूध पीता है इंडिया. Okay. श्वेता? अमूल दूध पीता है इंडिया. Okay. And audience में कोई गैस करना चाहेगा? जश्न मनाता है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. अमूल दूध पीता है इंडिया. टेस्ट ऑफ इंडिया आया है, अमूल दूध पीता है आया है. Someone has written utterly butterly delicious
And any other answers? ये ऑडियंस में से जिन्होंने लिखा है utterly button delicious, they get a point because their answer is correct. That is the official tagline of Amul. It is utterly delicious. I lost who wrote it on chat. Suraj wrote it on chat. Yes, Suraj gets the special point for this. And anyone else also who has written it. But Suraj ने सबसे पहले लिखा था, so Suraj gets the point for this. Congratulations, Suraj. बहुत सारे टैगलाइंस है, स्लोगन्स है उनके, क्लियरली हमने काफी सारे बता दिए, टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल दूध पीता है, अटली बटली, ऑल ऑफ दैट. ओके, ठीक है, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज लाइक अ पजल, सो आपको इसको सॉल्व करना है. आई स्पीक विदाउट अ माउथ एंड हियर विदाउट ईयर्स. I have nobody, but I come alive with wind. I speak without a mouth and hear without ears. I have nobody, but I come alive with wind. Arman has written answer. I will give 15 more seconds for people to figure out. Okay, Payal and Varda. Arman, you want to go ahead? Hava. Okay, Arman has said Hava. Who was the next one? Payal? Air. Ma'am, oxygen. Ma'am, oxygen. आपका फर्स्ट आंसर ही हम कंसिडर करेंगे, which is हवा. Payal, can you unmute? आप Ma'am, Red Bull. Tanna, आपके टर्न पे you can answer. Payal, you're still on mute. Yes. Yoshi, just 1 minute. Pause. Yeah. Hi, participants. I know you are returning back to the call, but since we started a little late, you might have less time to discuss the solutions. So I've opened the breakout rooms again for another 5 minutes. We are giving each team another 5 minutes. You can rejoin the breakout rooms and continue the discussion. This is only for the hackathon participants. Thank you. Thanks, Yoshi. You may continue. Okay, it was Payal's turn. Payal, आपका आंसर क्या है? Air, ma'am. Air. Okay. Varda, your answer? Echo, ma'am. Echo. ठीक है. Any other guesses, guys? We've had 2 air answers. We've had a couple of people say air, atmosphere, tree. किसी ने Red Bull भी बताया है. बहुत लोगों ने guess first. बहुत लोगों ने echo लिखा है, and वर्दा को चांस मिला था, उसने करेक्ट आंसर गेस किया. So echo is the point that Varda gets. Thank you everyone. Thank you everyone for guessing so many different answers. But Varda was the first one जिन्होंने सबसे पहले उसको बताया. So Varda gets the point. We'll move on to the next question. Next one. Okay. Which are the 2 most widely used vaccines against COVID-19 in India? COVID-19 के वैक्सीन हम सबने लिए होंगे. कौन से ऐसे 2 है जो बहुत ज्यादा यूज हुए हैं इंडिया में? बहुत लोगों ने आंसर्स लिखे हैं. Our chat inbox is flooded with this. But okay, Krishna, Pavitra, and Arman once again get to answer these questions. This question. So Krishna, you can go ahead. Covaxin and Covishield. Okay, Covaxin and Covishield. Pavitra? The same, ma'am. Covishield and Covaxin. Covishield and Covaxin. Arman? Covaxin, Covishield, Covax. Okay, Covaxin and Covishield are perfectly correct answers. कोई मुझे बताएगा चैट पे कि फॉर वन एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट की और कौन से वैक्सीन है जो शायद इंडिया में उतने यूज नहीं है और दूसरी जगह पे भी यूज हुए हैं? Any other vaccines that have been used? Pfizer. Booster vaccine. Booster. इन्हें बताया था ये. I think Ayush had mentioned the answer. Yes. So, I couldn't hear. Arman, आपका आंसर नहीं पता चला हमें.
but Ayush ने लिखा है Pfizer. आयुष ने बताया था Pfizer, and others can also put down their answer. So बाकी तीनों ने जो आंसर बताया था कोवैक्सीन और कोविशील्ड, that's perfectly correct. So all three of them get a point. And that is अच्छा, बहुत सारे आंसर्स आ रहे चैट पे, मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ. We will go back and find out more vaccines and we will come back with this. But अभी के लिए ये दो करेक्ट आंसर्स है जो तीनों पॉइंट मिलते हैं तीनों को. We'll move to the next question. Which is the oldest stock exchange in India? Stock exchange. तो वो कौन सा है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? So Kunal, Arman, and Suraj get the point. Bombay Stock Exchange. Okay, Bombay Stock Exchange बताए, दो आंसर्स है. और थर्ड वन? I think Kunal said National Stock Exchange. अच्छा, कुणाल said, sorry, मेरा नेटवर्क थोड़ा आ रहा जा रहा है. कुणाल said National Stock Exchange. I think Arman said Bombay Stock Exchange. And who was the third one? Suraj. Yes. सूरज, आपका आंसर क्या था? सूरज ने चैट पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला है. सूरज ने चैट पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला है. Thank you so much, Pratha, for helping us out. And a lot of people have also mentioned BSE and Bombay Stock Exchange on chat, which is the absolutely correct answer. So दोनों को ही पॉइंट मिलता है इस आंसर का. Thank you so much for participating, chat पे भी. We move on to the next question. Who is the number one richest person in the world? जो हम सब बनना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में कौन है? इसका आंसर हमें कौन बताएगा? अरमान, सूरज एंड तनिष्का. Elon Musk. Okay, Elon Musk is the first answer. बहुत सारे options हैं actually. हाँ, बताओ. Next one was Suraj. Yeah. सूरज, सबसे रिच पर्सन कौन है वर्ल्ड में? सूरज ने भी चैट पे एलॉन मस्क डाला है. ओके, सूरज ने भी चैट पे एलॉन मस्क डाला है. थैंक यू प्रदा. तनिष्का? Elon Musk. इलॉन मस्क. एंड चैट पे बाकी लोगों ने भी इलॉन मस्क लिखा है, कुछ लोगों ने जेफ बेजोस लिखा है. एंड द करेक्ट आंसर इज, मेजॉरिटी ने जो बोला है, which is Elon Musk. So congratulations, all three of you get a point. We will now move on to the next and last question of the quiz. I will request Shaheen to start doing the calculation very फटाफट. And the last question is very simple. सबको पता होगा. What is the number one social media app? सबसे ज़्यादा used social media app कौन सा है? Again, I've lost. Shweta, Tanishka, and Kunal. Kunal. Thank you so much, Pratha. So Shweta, आप बताइए कौन सा है सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल मीडिया ऐप? WhatsApp. Instagram. Okay. Facebook. WhatsApp. Facebook. Person has said, Shweta has said WhatsApp. Tanishka has said Facebook, and the third person was Instagram. Kunal, and you said Instagram. हाँ, बस तीन अलग-अलग आंसर आए for the first time, and we will see what the audience is also saying. Some people have said Instagram, some people are saying Facebook. It's a fight between Instagram and Facebook, basically. But the answer is Facebook. So Tanishka gets the point. Congratulations, Tanishka. It's Facebook, yes. And with that, we come to the end of the quiz. हम लोग थोड़ी ही देर में बताएंगे कि विनर्स कौन है इसके. बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. कितना मजा आया सबको? कैन आई सी रिएक्शंस ऑन चैट और थ्रू रिएक्शन बटन्स? थैंक यू फॉर छोटे thumbs up. Yes. We are now calculating the scores, and in the meanwhile, our participants are joining the call back again. They've had an intense round of discussions to our problem statement. We are excited to hear the same. I hope the quiz was fun. Thank you, Sayoshi, for hosting it. Students were very active, and I'm sure they had a great time. Okay, I can see the participants are back to the main call now.
While the career quiz scores will be the quiz scores will be calculated. In the meanwhile, we move on to the next part of the hackathon, which is the teams presenting their solutions to the audience. Shreyoshi, you would like to remind the audience of the problem statement once and their expected role in this second section, and then we can start with the teams presenting what they have to. Yes. किसी को याद है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? Before we move on. Yes, ma'am. Yes, Yashoda, go ahead. 9th and 12th discontinued school due to COVID crisis. तो बहुत सारे, थैंक यू यशोदा फॉर सेइंग सो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9th और 12th के बीच में ग्रेड्स में से ड्रॉप आउट हो चुके थे या होना पड़ा था उन्हें बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन द पास्ट 2 years. उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपने करियर एस्पिरेशंस की तरफ आगे बढ़ना, अपने करियर एस्पिरेशंस को पूरा करना. तो उनको हम कैसे सपोर्ट करें? हाउ कैन वी एंश्योर दैट ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप आउट हो गए थे, ड्रॉप आउट होना पड़ा था, उनको किसी ना किसी तरीके से अपने एस्पिरेशंस की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिले. दैट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब आप इसमें आपका क्या रोल है एज ऑडियंस? ईच एंड एवरी टीम, 6 टीम्स है, ABCDEFG. ये सारे टीम्स अपना अपना सोल्यूशन आपको बताएंगे 2 मिनट में, एंड एवरी सोल्यूशन के बाद आपके स्क्रीन पे एक पोल आएगा और आपको उसके सोल्यूशन को रेट करना है कि आपको कितना पसंद आया है या नहीं आया है. ठीक है? एंड बेस्ड ऑन योर वोट्स, आपके ऑडियंस पोल और वोट्स के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन है विनर्स, किसने सबसे अच्छा क्रिएटिव और कितना एफिशिएंट सोल्यूशन निकाला है इस प्रॉब्लम का फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है? We can start the presentations. Thank you, Shreyoshi. Just one. All right. So we now request Team A to begin their presentation of their solution. Dinesh and Vinay, can any one of you take the lead, please? Yeah, I will be presenting. Shall I share the screen? Sure, Dinesh. And to remind you, you have 3 minutes to do so. Yeah, let me share the screen first. Yeah. I'm just reminding you for the time. Don't worry. Are you ready? Wait a second. Is it visible? My screen is... Yes, it's visible. Okay. So I'll start now. Your time starts. Okay. Hi everyone. Good evening. I'm Dinesh. And I will be presenting you with a solution that that our team have came up with. So as you can see, my first screen is going to road to going back to school. So back to school basically helping or motivating or in some other ways help करना हमारे students को back to school पे जाना या drop out से बच के वापस rejoin करना उन्हें. So second slide में हमने drop out के reasons देखे हैं. What are the major reasons? Some of the reasons that have led to drop out. So एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन करके गवर्नमेंट की एक वो है बोर्ड है जिनके द्वारा डेटा मिला है कि 17% ऑफ सेकेंडरी स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट है वो 17% है जिनका ड्रॉप आउट हुआ है इस कोविड के दौरान और कोविड के बाद पे. तो 17% का डेटा मिला है ड्रॉप आउट रेट का. और एजुकेशन जो है जैसे हमें पता है हैज ऑलवेज हैड पर्सिस्ट इश्यूज सच एज एसएस कंटिन्यूटी लर्निंग गैप्स अमॉन्ग अदर इशू व्हिच एग्जिस्टेड ड्रॉप आउट. सो जिसके कारण ड्रॉप आउट होता था वो कुछ ना कुछ पहले से ही बहुत सारे इश्यूज थे. लेकिन जब कोविड आया तो हम सब ने या आपने भी देखा होगा हमारे आजू बाजू या सब जगह कि ड्रॉप आउट रेट कैसे इंक्रीज हुआ हमारे आजू बाजू या हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या हमारे सोशल सर्कल में किसी न किसी ने जरूर एक ना एक जन ने तो जरूर ड्रॉप आउट लिया था या कुछ मोमेंट के लिए छोड़ा था. सो उनके सम रीजंस थे. अनएम्प्लॉयमेंट, डिजिटल गैप, कोविड सिचुएशन. अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज हो ही गया था, आपको ही पता है, सबको ही पता है, सबके पेरेंट्स या किसी न किसी द्वारा तो
और डिजिटल गैप यानी डिजिटली जो हमको डिजिटल यूज करना पड़ा था, जो एक नया डिजिटल ईरा आ गया था कि हम सबको वो ऑनलाइन क्लासेस यूज करना, टैब यूज करना, और उतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे, तो वो एक रीजन था कि गैप बन गया था। और उस गैप के कारण अभी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे थे। वो गैप एक बार उनका बढ़ गया तो वो नए आगे नहीं आ रहे थे, वो गैप होने के बाद वो जाना ही नहीं चाह रहे थे वापस। और कोविड का सिचुएशन तो पेरेंट्स भी नहीं अलाउ कर रहे थे, खुद भी हमें भी डर था ही। तो तो ये भी बहुत सारे रीजंस थे। और सॉल्यूशंस के लिए मैंने एक फर्स्ट किया सोशल इमोशनल स्किल्स प्रोग्राम। सोशल इमोशनल स्किल्स प्रोग्राम क्या होते हैं? बेसिकली हमें अपने इमोशंस के बारे में जानने में मदद करते हैं और हमारे इमोशंस को अप्लाई करने में, ताकि हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो। आप सबने खुद ने देखा होगा कि हमारा सोशल सर्कल कैसे डिक्रीज हो गया था, हम कैसे कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे लोगों के, और ना हमारे फ्रेंड्स के, ना हमारे स्कूल मेट्स, ना कुछ। तो हमारा सोशल सर्कल एकदम दब गया था। तो उसको इंक्रीज करने के लिए, या आप कैसे आगे बढ़ोगे, उसके लिए एक सोशल इमोशनल स्किल्स का एक प्रोग्राम रखेंगे हम 2 to 2 वीक्स। और लाइक एक प्रोग्राम हुआ 7 वीक्स का, 2 वीक्स का, 5 वीक्स का, जो हमें उन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेगा। और प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में आ सकते हैं एज अ किट भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, स्कूल बुक्स से लेकर के क्लोथ से लेकर के, वो एक रिसोर्सेज आएंगे। डिजिटल रिसोर्सेज टाई अप कर सकते हैं बायजूस एंड ऑल के थ्रू, कि जो पहले ही ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जो उनका गैप हो चुका है, वो गैप को रिकवर करने के लिए वो पहले से ही बायजूस में अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट किया, 9th में ज्वाइन करना, तो उसको 8 के कवर अप करने के लिए वो बायजूस के थ्रू वो सब देखेगा एंड देन कवर अप कर सकेगा। वो एक होगा उसमें। एंड देन प्रोवाइडिंग स्पेशल रिसोर्सेज फॉर दोज विद गैप, उसमें ही वो आ जाता है कि एक स्पेशल प्रोग्राम रखा जाएगा गैप के स्टूडेंटों के लिए ही, कि वो गैप को कवर कर सके और फिर ज्वाइन कर सके। और फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही, फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही, फाइनेंशियल सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा वो है। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट या तो स्कॉलरशिप के थ्रू होगा, या कुछ एक 25% की स्कॉलरशिप, या कुछ भी जो गवर्नमेंट बॉडी, एनजीओ या मिलकर सब स्टेक होल्डर्स आकर दे सके, तो वो भी एक हो सकता है बहुत अच्छा। और रिसोर्सेज के अंदर और एक हमने सोचा था कि जैसे हमें अगर रियल लाइफ एक्सपोजर अगर मिल जाए, यानी कि अगर जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, अगर समझो आईटी से कोई एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट आकर दे आर गिविंग देयर व्यूज कि हमारे यहाँ पे वर्क लाइफ कैसा है, हाउ 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 यू हैव टू डू कोडिंग, और कैसे कोडिंग करते हैं, कितना एंगेजमेंट चाहिए रहता है, व्हाट आर द टाइमिंग्स एंड ऑल, ये अगर मिल गया तो उसके कारण और आपको एंकरेजमेंट आता है, आपका पे स्केल देख के, ये देखे वो करके, तो स्टूडेंट वापस आ सकते हैं। वो एक वो रीजन था। एंड देन वन ऑफ द मेजर रीजन, एज आप सबको भी पता होगा कि अगर कभी भी कहीं भी ड्रॉप ऑफ हो सकता है, जस्ट 20 मिनट 20 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स ओनली, लास्ट 10 सेकंड श्योर। या तो अगर कोई भी रीजन हो, तो स्टीरियोटाइप्स के कारण या प्रेजुडिस के कारण ऑलमोस्ट a majority of time girls student or girls are the one who have been affected। तो इसमें भी जरूर द ग्रोथ और जो डेटा है गर्ल स्टूडेंट का ऑलमोस्ट ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर डेटा नहीं भी है तो भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो हम सबको पता है हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से कैसे होता है। तो गर्ल स्टूडेंट को कैसे करने के लिए हमने एक सोचा था कि एक एज अ कंपटीशन टाइप रख देंगे हम गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के थ्रू। मतलब अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट स्कूल की डेटा है, तो वो प्रोवाइड कर देगी कि हमारे यहाँ पे 10% जिनका गर्ल्स रेट का ड्रॉप आउट है। तो अगर फिर मध्य प्रदेश आएगी, मध्य प्रदेश बोलेगी मेरे यहाँ पे 20% है, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा, तो वो खुद अपनी तरफ से ऑल दी Thank you, Dinesh. प्रोवाइड करेंगे। हाँ, थैंक यू। Yes, thank you so much. Sorry to cut you out, but Yeah, no problem. the idea is also to pitch your solution in those exact 3 minutes. So, Okay, yeah. But thank you so much for Thank you. so well and so creatively. अभी ऑडियंस में आपके लिए एक वोटिंग पोल खोलूंगा और आपको वो सवाल के जवाब देने हैं। सिंपली क्लिक करके आपको 1 मिनट दिया जाएगा वो पोल्स को आंसर करने। आपके स्क्रीन पे आपको पोल्स दिखेंगे। द टाइम फॉर द वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। ऑडियंस, आपको पोल दिख रही है आपकी स्क्रीन पे? यस, प्लीज क्लिक ऑन द ऑप्शंस व्हिच यू कैन सी। Thank you. We have 42 participants who have voted out of the 100 we have. That's great. We are waiting for 50 more. We have 60 now. 20 more seconds left. जिसने नहीं किया है, I would request them to please vote.
Thank you. I can see the graphs changing with every second. Last 10 seconds of the voting. 5 seconds. And we shall end the poll. All right. We will now move on to our next team, Team B. I would request you to come and share your solution right away. Please keep track of time. You will be given negative points if you exceed the 3 minutes. So please be careful. Team B, can we have you on board? And the dropout crisis, the first one we can do is the connect with parents outside of school, because a lot of students drop these schools, and there are some financial issues. And the second point is reduce cost of education, because of a lot of cost students drop these schools, and this is the main maybe reason. And offer mental health support. Today our youth is going a lot of peer pressures, and there are a lot of depressions also they go through. So because of that, they also drop the high schools or universities. And the fourth one is provide community services. And the fifth one is try a mentoring or tutor program. And because of this mentoring or tutor program, they can share their views and their problem with them, so the mentor can suggest them and it can motivate them, so they would not they would not drop these schools. And the sixth one is emphasizing the importance of education and connect lessons to the real world. It is very necessary to know about the real world. So because when we know about the real world what is going through in we are facing a lot of unemployment, and a lot of issues are there. So if the persons know about this, so I'm sure that he will not drop out the schools, because it is very necessary to get graduation, or even if you are not able to get graduate, you should do diploma. And the seventh one is teach children about career and salary realities. And the additional point I would like to add is a school should enable dropout early warning system, so that they can identify that who are at the risk of dropping out of schools, and it will make them to focus on individual who struggles to perform well. And if the and we would get to know about this when the school authorities and universities provide the list of the students and their information, so we can phone call them and ask them that what are the issues they are facing. And they can either do internships and long term internships, and we can either provide them scholarships. Lubaba, if you want to add some more points, you can add. Thank you, Farzana. So just to add on to Farzana's points, I would like to say that we can get in touch with the educational institutions, and we can get in touch with them, so that the needs of the children are understood well. And as Farzana mentioned, we can first of all identify the youth who have dropped out of colleges and such vulnerable groups, so that we can figure out with them the probable solutions that we have in front of us, and the options that we can render to them for going ahead with their careers, so that they don't feel left out. And the second thing is we can offer sponsorships and scholarships to them. The next thing that was mentioned was Lubaba, sorry to cut you. If you're repeating the same points, it might not be very helpful. So can we conclude that the points which were presented were the solutions for your team? Will that make sense? Just a last point that was left. Okay. Can I just mention that? Yeah. If it's different from the 7 points. Yeah, it is different. Yes, sure. Yeah. So what Rukaiya ma'am mentioned was we can help them with part-time jobs by providing them individual support. We can have telephone calls, one-on-one visits, and long-term mentorship supports. Oh, that's wonderful. Thank you so much. Thank you so much, Team B, Lubaba, and yeah, I am Team C. Wait just a minute, Kshitij. Are now relaunching the poll for Team B. Audience, your time to vote starts now.
Let's give 30 seconds for voting since we are running a little short of time. Can we do it a little more quickly this time? Instead of 1 minute, let's give 30 seconds. Awesome. We already have 40 participants. Great. Okay, last 10 more seconds. Thank you, everyone. We shall now close the vote. Okay, all right. With that, we move on to our team C. Kshitij, again, a gentle reminder to stick to the time limit. And I would suggest either only one person presents, or even if there are two, they do it within the 2 to 3 minute limit. Go ahead. Okay, I'll share my screen. Yeah, so bringing youth back to education. So this is team C presenting. Yeah, so my solution is that in 3 stages. First is individual level, organizational level, and third is government level. तो इंडिविजुअल लेवल में क्या कर सकते हैं हम लोग, खुद एक्टिवली सीक आउट कर सकते हैं ये सब स्टूडेंट्स को, और फिर उनको कनेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अंतरंग, जो एजुकेशन फील्ड में काम करते हो. जरूरी नहीं है अंतरंग से ही कनेक्ट करना है, हम लोग और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, जो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हुए हैं उनको हम लोग अंतरंगा जैसे एनजीओ से कनेक्ट कर सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे 2 सॉल्यूशंस है. ऑर्गेनाइजेशन जो ये एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं वो पहले जो मेंशन किया इंडिविजुअल लेवल सॉल्यूशन, उस पे उन्होंने काम करना चाहिए. दे शुड बी एक्टिव एडवोकेट्स ऑफ दिस इनिशिएटिव. सब ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आके काम करना चाहिए. और देयर इज अ वेरी कूल program which has launched by government in this budget, one class one TV channel. तो organizations क्या कर सकते हैं, organizations डोनेशन से टीवीज कलेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप्स कलेक्ट कर सकते हैं, और ये टीवी हम लोग हर एक कम्युनिटी में सेटअप कर सकते हैं जहाँ जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं वो आके सीख सके कि क्या चल रहा है, मतलब एटलीस्ट देख सके कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है और कैसा है. ये बच्चों का हम लोग वैसे मतलब स्कूल ना जाने से उनके टाइम टेबल में जो उनको कन्वीनियंट हो वैसा टाइम लेके हम लोग वो बच्चों को सिखा सकते हैं वन क्लास वन टीवी चैनल पे. और ये गवर्नमेंट लेवल पे भी 2 सॉल्यूशन है. गवर्नमेंट शुड मेक स्टैंडर्डाइज्ड कॉमन टेस्ट. मतलब ये टेस्ट गवर्नमेंट का एजुकेशन फील्ड विल वर्क ऑन दिस टेस्ट. और ये टेस्ट ड्रॉप आउट बच्चों को, मतलब स्पेसिफिकली कोविड में जो ड्रॉप आउट हुए हैं वो बच्चे दे सकते हैं. और ये टेस्ट से उन्हें पूरा साल रिपीट नहीं करना पड़ेगा. जिस स्टैंडर्ड में वो ड्रॉप आउट हुए हैं ये टेस्ट देके दे कैन मूव ऑन टू अदर स्टैंडर्ड विच इज अबाउट. जैसे कि अगर कोई बच्चा 9th में ड्रॉप आउट हुआ है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट देके वो 10th में जा सकता है. और गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक प्रोविजंस लाइक स्कॉलरशिप्स और रिजर्वेशन स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम 2019 और 2020 वेयर कोविड स्टार्टेड. मतलब जब कोविड स्टार्ट हुआ उधर से वो पॉइंट से जो बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है वो बच्चों के लिए प्रोविजंस बना सकते हैं गवर्नमेंट. अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप्स भी बना सकते हैं, नहीं तो रिजर्वेशन हर कॉलेज में हर स्ट्रीम में ये बच्चे एडमिशन ले सकते हैं. ऐसा रिजर्वेशन
गवर्नमेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को करना Thank चाहिए। you. Thank you. Just a minute. Just a minute. All right. Thank you for that. Sorry for that disturbance, first of all. Thank you, Sitish, for sticking to the time limit and presenting your solutions in such a short and crisp manner. अभी हम polling के तरफ बढ़ते हैं for team C. Just अगर questions अभी तक clear नहीं है polls के, तो मैं एक बार बस explain करना चाहूँगा briefly. First question है, is the solution smart or innovative? इसका मतलब है कि आपको लगता है ये solution कुछ unique है जो अब तक exist नहीं करती है, और smart है कि इसमें हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगे, पर फिर भी हमको efficiently या एक अच्छे तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढ पाए. और सेकंड, इज द सोल्यूशन रियलिस्टिक, यानी कि ये अभी इस वक्त हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कि फिलहाल ये अनरियलिस्टिक है और इसके लिए बहुत से रिसोर्सेज और बहुत सा और भी टाइम लग सकता है. सो आई एम रीलॉन्चिंग द पोल्स फॉर टीम सी. योर टाइम फॉर वोटिंग स्टार्ट्स नाउ. Request the participants to vote quickly. Thank you. I can see the graphs changing. You have 20 more seconds. Thank you, everyone. Thank you, Nisha. Thank you, Preeti. Thanks, Ashwini. Okay, last 5 seconds. Okay, now we close the poll for team C and we move ahead with our fourth team. And I know everyone, we are almost at 6 p.m. I would request the remaining 3 teams to be very quick. I would also request the participants to stay for another 10 minutes. We would definitely wind up in the next 10 to 12 minutes maximum. I hope that you stay on call and judge all the 3 remaining solutions. Thank you. Team D, team 4, can we have your presentation, please? Team D. Sania Khan, Srijoni, anyone who would like to? Surendra, Aisha is present. Okay, perfect. Okay. Can you see the screen? Yes, Aisha, we can see the screen. Your 2 minutes time starts now. Okay, thank you so much, everyone. It's a very short explanation. So I think for all the dropouts, for people who drop out, actually the reason for every person, there is a different reason for why they do a certain kind of thing. So I think for that, and not to be very vocal, some people don't like or prefer to say it in an open, we can use Google Forms and reach out people and ask them that why did you drop out, and accordingly we can actually get support for those students. Like for such students, teachers support, school support, and peer support is very important. Some people become dropped out because of lack of money or because of financial crisis and financial issues, while other because of lack of interest, while other because of lack of time or other different house problems and certain things. But when these people try to come back, so I think teacher support is important, the peer support is important, that you can do it. And I think they need some mentorship. So, and for people, there are students who want to study and who work as well. So for such students, we can have night school, we can have online sessions, and we can actually encourage self-study part, so that that you can learn on yourself in this world. It's everything, it's digital, almost everything. So self-study can be self-study can be said for more. Then we can look for apps, we can look for government policies which already exist for such people. Like for example, there is one of the policies that if you have not given your 10th standard or SSC board with the school, you can give it private in any year you want. So I think such normal government policies which actually exist, we can use them. We can use other organizations for their support. We can
collect students who really feel like they want to come back and study, and we can support them. We can make them aware of scholarship programs if there are financial crises. We can get them counselors if they feel mentally or disheartening and mentally not able to study. And we can ask for parents' help if they are not supporting their child to study. Thank you. Thank you so much, Aisha. That was very short and crisp and to the point. Now we would begin the polls for Team D, and the time for voting for the audience starts now. We have 20 more seconds, 15 seconds left. Thank you, everyone. Thank you, Tanishka. Thanks, Sanya. I would request the others to also vote very quickly. Even the participants. All right. We end the poll for Team D. I would request Team E to come up and share their solution. Team E. Yes. Okay. Yes, Mukesh, you can go ahead. Okay, so we all know that. Yes. Yeah, so my name is Purvi. Sorry, And yeah, please go ahead. Yes. yeah, so we all know that the topic is that millions of students in India have dropped out from school due to COVID-19, and how we will be able to fill the gap between like their career and how to get them back to study. So simply we can firstly start by creating awareness, because they have lost track, they like in 2 years they have lost track, and creating awareness is something which can help them that get back into track. And telling them the facilities available, we can just tell them that these are the facilities that you can take up. We can also take sessions of their parents, because parents are the one who stopped them going to school. Even after lockdown, when schools were open, parents were very cautious that we don't want our children to go to school, they may get corona or something, so they stopped sending them their students to school. So we can create awareness among the parents and the students, like why going to school is important, and why continuing education is important, and why continuing education will help them further in life. Also providing mentors, I think, who have lost contact from studies. Mentors should be given first, because mentors are the one who can take them to the proper track, and tell them the importance of education and why to continue education, and how these students can continue education. We have come up with some of the solutions which can be explained by Mukesh. Mukesh, continue. Thanks, Ruby. The student who... Mukesh, just a reminder, you have 1 minute to explain the solutions. Yes, ma'am. Yes, sir. The student who is not very good in financially, they can take a support of scholarship and take help from their school as a for their concession, and they can also connect through another NGOs. And for the student who are looking for their aspirations and they wanted to pursue something, they can go on a website of government website, which is called eskillindia.gov.in, where they can learn lots of things, lots of courses, which is like agriculture, beauty, construction, media, entertainment, and there are many things they can learn. And they can also take in admission in government colleges and school, which is very affordable, and they can also learn where in a better way. Thank you so much. Thank you so much, Mukesh and Purvi. We shall now begin the polls for Team E. Audience, your time starts now. Thank you. I can see 20 responses already.
Thank you, everyone. May I request others to also drop their votes very quickly? I can see 40 as of now. Thank you, Aisha. Thank you, Rasika. 10 more seconds. All right. And we end the polls for team E. I would request team F, last team of the hackathon, to come and present their solution. Hello everyone. It's been a very long evening, so I'm sure आप सब थोड़ा थक गए होंगे. लेकिन this won't take more than 5 minutes. Schooling हम सब. It's hi Tanisha. The time is 3 minutes. Just a quick reminder. Okay, yeah. Yes. Thank you. Please go ahead. Being a student myself, मैं अभी 10th grade में हूँ, तो I have thought of these solutions keeping my situation in mind. So I hope it's helpful. So Pehla solution is counseling, in which we need parents, students, and a counselor. And this will basically be interactions between these three people, and counselor giving parents and students a better reality check in order for them to understand कि उनका future में वो क्या कर सकते हैं. क्या उनके पास पढ़ाई के लिए time है या क्या उनके पास पढ़ाई के लिए time नहीं है. And वो balance लाने के लिए कि how can they help financially and how can they continue with their education. Counseling is one option. सेकेंड ऑप्शन जो सबसे अच्छा चल सकता है वो नाइट स्कूल है. ये कोविड के कारण लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th 10th 11th 12th ग्रेड हैड टू लीव देयर एजुकेशन इन द मिडिल एंड स्टार्ट हेल्पिंग आउट देयर फैमिली फाइनेंशियली. तो उस वजह से हम अब ये तो नहीं कह सकते ना कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए. आप वो करिए लेकिन वो दिन में करिए, और रात में लेट्स से 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 6 आवर्स आप एक नाइट स्कूल अटेंड करिए. ये गवर्नमेंट रन होगा, बीएमसी रन होगा, लेकिन अंतरंग फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल है जो मैं आगे चल के बताऊंगी. थर्ड सोल्यूशन जहां पे आता है अंतरंग इज वोकेशनल ट्रेनिंग. यहाँ पे अंतरंग अपना करियर अवेयर और करियर रेडी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेगा. और जैसे अभी आप लोग अगर 10th स्टैंडर्ड में हो, बीएमसी स्कूल में हो, कोई भी स्कूल में हो, आपका 10th का पोर्शन काफी होता है. लेकिन ये स्कूल्स जो नाइट स्कूल्स होंगे इसमें वी हैव रिड्यूस पोर्शन और ज्यादा हम फोकस करेंगे स्किल डेवलपमेंट पे. तो इसीलिए अंतरंग विल हेल्प अस डू दिस. और फ्यूचर में दिस विल हेल्प अस क्योंकि 12th के बाद अंतरंग का जो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल है दैट विल हेल्प अस place these children, these 12th grader graduates, into places where they want to work. Fourth is financial aid. आप स्कूल अटेंड करो, मैं आपको पैसे दूंगी, एक स्टाइपेंड दूंगी ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन रहे. ये बार्गेन नहीं है, गेन है, क्योंकि कोविड किसी की गलती नहीं थी. नो वन इज टू ब्लेम, सो नो वन शुड सफर ऑल्सो. अब स्टूडेंट्स हैव सफर्ड सो मच, तो इट्स टाइम दैट वी पे बैक टू देम, राइट. तो इसीलिए फाइनेंशियल एड एक सोल्यूशन है अलॉन्ग विथ नाइट स्कूलिंग. और ये फिजिकल जो है, फिजिकल भी ऑनलाइन भी, काफी लोग हैव शिफ्टेड अवे फ्रॉम मुंबई, गांव चले गए हैं, कहीं और रहते हैं, किसी और कंट्री स्टेट में रहते हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन स्कूल भी स्टार्ट करेंगे. तो अगर एज पर एज योर कन्वीनियंस ऑनलाइन बैचेस रहेंगे सो दैट यू कैन अटेंड ऑनलाइन स्कूल. इफ यू आर इन द सिटी यू कैन ऑलवेज attend the physical school. It's all at your convenience. So we can set up many different alternatives for students to decide. फिर जो सिक्स सोल्यूशन है ये मोबाइल स्कूल है. इंडिया में देयर आर मेनी मोबाइल स्कूल्स राइट नाउ, लेकिन हम इसकी संख्या अगर और भी बढ़ाएं तो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स. जैसे कि जो गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर देम. जैसे ये आप एक इमेज देख रहे हैं, दिस इज हाउ अ मोबाइल स्कूल लुक्स लाइक. So in the end, these were my 6 solutions which we can mix together and work out something. But the most important thing is that together, students, parents, government, or Antarang dress organizations, we can do it. Thank you. Thank you so much, Tanisha, for that smooth presentation and keeping it well within time. Polls for the last team, Team F, are starting now. Audience, I request you to quickly give the votes for Team F. Okay, we have 10 more seconds.
All right. The polling for Team F ends now. Okay, thank you so much. I would like to invite Shreyoshi back on call to announce the winners for the quiz and also the hackathon. While the hackathon scores are being calculated, we have the winner for the quiz. Before we move ahead, I would just like to say thank you for all the teams, the students, the YB members, the donors, the mentors and the expert speakers for coming up with such innovative solutions. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये solutions सिर्फ ये event तक सीमित नहीं रहेंगे. They won't be limited to the event. These are problems which even Antarang tackles on a day-to-day basis. And therefore, Antarang is going to try its best to incorporate some of the best solutions from all of you and impact the students who have dropped out of school and ensure that they stay on the careers of their choice. So, and we will also let you know the progress of the same. So for now, let's announce the winners for the quiz, which happened with the audience, and then we would announce the winners for the hackathon before we close the event. Yes, we are just presenting our screen. Just give us a minute. Nikesh, can you please present the winner slide? Yeah, sure. Yeah. All right. So Gen Z Tingji winner is Arman Khan. Arman, are you on chat? Yes, I am there, sir. Awesome. Thank you, Arman, for participating so actively. आपको एक certificate भी देंगे हम जरूर. Can we have a round of applause for Arman? Can we congratulate him, please? All right, thank you, Arman. Before we tell you the scores and the top two winners for the hackathon, I would just like to open the discussion for 1 minute to the audience or the participants and share their thoughts about the hackathon, the problem statement or the solutions. Especially the audience, आपने सुना अपने polls लिए, but हम discussion नहीं कर पाए उन solutions पे. तो अगर किसी को कुछ share करना है 1-2 मिनट में till the scores are being counted, I would like to encourage that person to speak. Anyone from the audience or even the participants, the donor partners, the mentors who would like to share their experience or thoughts on the solutions? Surendra, maybe we can have the problem statement on screen. So Sure, sure. Thank you, Priya. Priya says in the chat, excellent presentations and thinking. So many insights. How to use technology, government mentors, and the school system itself to solve the problem. That's true. Thank you, Priya. Anyone else who would like to share their thoughts? Any participants who would like to share their experience briefly? Yeah, may I go ahead? Yeah, Kshitish, sure. Yeah, so every person that presented during hackathon had very unique and very diverse point of views at looking
towards this problem, which I liked very much. Like, even though we worked together, but there were so many diverse views on everything. So that part I liked very much. Thank you so much, Kshitij. Thank you for sharing. All right, we have the winners ready and we will present to you the winners in another 10 seconds. Any guesses, audience? Can you put your guesses in the chat for the winner? Team A, B, C, D, E, F. Can we have some guesses in the chat? Preeti says Team F. Urvi also says Team F. It seems like there's a majority on Team F. Okay, Team A, B. We have some variety now. Awesome. All right, let's see the final results. There are two winners for your information. So let's see the runner-up and the final winner. Yay. That's great. Congratulations, Team E and Team F. Team E is the top winner and Team F is the second winner. Full time. Oh, sorry, these are the two winners. The order is that the Team F is the top winner with 44% majority votes in excellent, and Team E is the runner-up with 35% votes in the excellent category. Congratulations, Team F and Team E. So, audience, आपका जवाब सही था. Team F is the winner. Team F and E and all the participants of the hackathon will provide you with participation and winning certificates. I hope all of you enjoyed the 2-hour event. I know it stretched a little, but it was a fun-filled evening with felicitating our graduates, followed by awesome performances and a quiz and this interesting hackathon, which has given us a whole list of solutions to work upon. Thank you, everyone, to participate in the same. I would now hand over this to Nikesh and Manisha to close the session and say a very warm goodbye to all of you. Over to you, Nikesh and Manisha. We are back, audience. Hi, dosto. Thank you so much for being such an enthusiastic participant. And once again, congratulations on graduating from Antarang's career program. आप सभी के लिए अंतरंग ने इस सेलिब्रेशन को और शानदार बनाने के लिए आप सबके घर पे कुरियर किया है, कुरियर गिफ्ट्स किए हैं. तो अगर आपको पार्सल नहीं मिला हो या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हुआ हो तो आप अपने फैसिलिटेटर से रीच आउट कर सकते हो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडियर. एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. अभी हम एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. आप अगर अभी फॉलो करते हैं तो आपको फॉलो बैक मिलेगा अंतरंग से. सो आप जाइए अपने सोशल मीडिया पे अंतरंग फाउंडेशन के और दबा के फॉलो करिए. Search out Antarang Foundation and do follow us for more updates. Yeah. Thank you everyone. Thank you so much for you. Most welcome, Rupali. Thank you. All the very best for your future endeavors. Thank you for joining in. Thank you all. Thank you so much. I'm getting some responses on Instagram. Accepted.